Now we move to the Queen of Deccan and Oxford of East, the city of Pune, Maharashtra, where digital classroom and digital e-content learning modules will be digitally launched by the Honorable Minister today. Maharashtra vision and mission of higher education is also aligned with the Prime Minister's vision of Digital India. In this spirit, let's watch the video of Maharashtra. The state of Maharashtra received infrastructure grants to universities under the RUSA program. The Savitribai Phule Pune University, which was one of the recipients of infrastructure grants, used the resources to create an e-content learning module and digital classroom. The technical features will involve real-time messaging protocol, supports video at any location without buffering, video conferencing, enabling interaction with overseas faculty, researchers, enable publishing on TV, internet, mobile, and fast and easy post-production facility. The project has created modules of 25 sessions, covering disciplines such as management, health sciences, social sciences, electronics, IT, etc. This project will benefit nearly 800 affiliated colleges and more than 5 lakh students across 3 districts, including tribal areas in the state. The total cost of the project is to the tune of rupees 75.71 lakhs. This technology has enabled me to visualize the concepts as and when they are taught, and of course will promote curiosity and innovation. I am thankful to RUSA for providing the financial support for establishing this facility. May I now request Honorable Minister to unveil the plaque of digital classroom and digital e-learning content modules of Savitribai Phule Pune University. We are now connecting with Savitribai Phule Pune University, where I request Mrs. Manisha Verma, State Project Director, RUSA, to take the program forward from here. A very good morning and a hearty welcome to all of you. We really feel honored to be part of this historic event of digital launch at the national level of our project today. It has also been a joy for us to see the wonderful work that the other states have undertaken under RUSA. We have a galaxy of distinguished guests here, including Honorable Vice Chancellors from around 7 universities: Pune, Aurangabad, Nanded, Solapur, Amravati, ICT Mumbai, Gondwana, from all across the state. Also present with us are Director Higher Education, esteemed principals, faculty, researchers, students, and members from media. We also have student representatives from tribal areas of Gadchiroli. Honorable Madam, the live webcast of this program is watched today by lakhs of students, including 800 affiliated colleges of Pune University. In addition, we have made arrangements to organize live webcast in auditoriums of all our state universities and major colleges from different locations who are today watching this event. Madam, our Chief Secretary has also conveyed his warm greetings. He is unable to attend because of a parliamentary committee visit today. We would now like to present a short video clip which showcases RUSA's journey so far in our state and conveys our Honorable Minister, Shri Vinod Tawdeji's wishes on this occasion. I am also delighted to announce that on this day, RUSA Maharashtra is launching its Facebook page. This is a short video. Kindly watch it. Rashtriya Uchitar Shiksha Abhiyan Maharashtra welcomes you and presents a short film on our initiatives. Maharashtra has been the cradle of legends from every field, a laboratory to experiment progressive and creative ideas that have transformed India. Maharashtra has the second highest number of colleges in the country,
Its gross enrollment ratio presently is over 27.6%, above the national average of 23. 75% of its public-funded colleges and universities are accredited. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, or RUSA, a scheme sponsored by the Government of India, is seen as an important tool for transforming higher education in Maharashtra. It is basically an approach to guarantee access, equity and excellence in higher education. RUSA has begun several new projects like building hostel blocks, toilets, water supply systems, solar-lit campuses, sports facilities and cafeterias. There are special projects to upgrade the libraries and laboratories and develop electronic content. Maharashtra is taking the lead in setting up hubs for research, innovation and technology transfer under RUSA. Maharashtra leads in DNA bar coding, preservation of the biodiversity, self-healing polymers with anti-corrosive properties, geospatial and data analytics. Research projects have been proposed for urban planning. The Maharashtra State Universities Act is being reformed to promote autonomy and excellence in governance. We realize the need to address the challenges of growing aspirations of our people for an education that is comparable with the best in the world. रूसा के माध्यम से ये जो एक मौका केंद्र सरकार ने दिया है कि महाराष्ट्र के छात्रों को उच्चतर शिक्षा में कई और एकेडमिक एक्सेलेंस की ओर ले जाने का, उसका पूरा हम उपयोग करेंगे। नमस्कार। In keeping with the spirit of Digital India, RUSA Maharashtra is excited to launch its Facebook page today. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan Maharashtra is now on Facebook. Connect to know updates and events on higher education in your state. Come, join us in making this a vibrant platform for exchange of ideas and issues that matter to you. Together, let's make education better. Do send us your comments and suggestions on our page. And remember, we love your likes. May we now invite our students, ma'am, who have joined us in large numbers, not only from Pune, but distant tribal area of Gadchiroli, to interact with the Honorable HRD Minister. Students gathered here, please raise your hands. And before you ask your question, please give your introduction. Thank you, ma'am, for the opportunity. My name is Shantanu Joshi. I am from Department of Management Sciences, Pune University. My question to you, ma'am, is, ma'am, we students have many ideas and project works which we are working on, and we want to share with you and various other experts of our nation. So can MHRD give us a e-platform, like a junior version of TED Talks, where we can share our ideas and project work with various experts and get their consultation on it? तुमचं नाव काय? शंतनु जोशी. जोशी साहेब, एक काम करा तुम्ही, प्रोजेक्ट बनवा आणि या दिल्ली. Okay, I'm currently working on it. Thank you, ma'am. I think it's a wonderful idea, and especially if it is reaching out to students in government colleges and universities, it'll be the first. I've always said that the students are the stakeholders of my ministry, and I'm hopeful that Manisha ji, who's right now moderating the entire event, will facilitate your meeting with me. Yes, ma'am. Next week. चालेल का तुम्हाला? Sure, definitely. हाँ? Definitely, sure. I will be there. हाँ, या तुम्ही. Yes, ma'am. भेटू तुम्हाला. अभिनंदन. नक्कीच, ma'am. Thank you, ma'am, for your generous invitation. Can we have the next question? Please introduce yourself. नमस्ते मैम, मेरा नाम मयूरी मडावी है, BSc थर्ड ईयर, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज ऑफ गढ़चिरौली. मेरा सवाल है, मेरे जैसे स्टूडेंट जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई या फिर जॉब के लिए बाहर शहर में जाना पड़ता है. ऐसा यानी आगे की पढ़ाई के लिए हमें गढ़चिरौली में, सिर्फ गढ़चिरौली में ही हमें जॉब या फिर आगे की पढ़ाई हो सके,
इसलिए हमें सब्जेक्ट ऑप्शन बढ़ा दिए जाए, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? मयूरी, 2 काम हो सकते हैं। एक, हम लोगों ने सभी संस्थानों को ये कहा है कि अगर आप स्किल के प्रोजेक्ट्स करना चाहें और स्पेशली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन करना चाहें, तो रेगुलेटर के पास आकर विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर उन स्किल्स का नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है तो आपका इंस्टीट्यूशन सेकंड शिफ्ट में स्किल्स की ट्रेनिंग कर सकता है। मैं ये भी चाहूंगी कि आपके पास ये जानकारी हो कि प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार विशेष रूप से स्किल इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है मुद्रा योजना जैसा एक इनिशिएटिव। लेकिन लड़कियों की दृष्टि से न सिर्फ मुद्रा योजना अपने आप में एक संजीवनी बनती है आर्थिक दृष्टि से, जहां पर आप 50,000 रुपया से लेकर 10 लाख तक की राशि बिना किसी गारंटी कोलैटरल को भरे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो स्टैंड अप इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ की राशि आप ले सकते हैं और उसमें विशेष प्रावधान SC ST और गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए किया गया है। मुझे लगता है उससे भी बहुत इम्पेटस मिलेगा कि स्किल और फाइनेंशियल सर्विसेज के समन्वय से, समागम से आपकी अपॉर्चुनिटीज आपके ही जिले में, आपके ही स्थानिक एरिया में बढ़ेंगी। जहां तक कि ज्यादा एजुकेशनल ऑप्शंस की बात है, आज महाराष्ट्र में ई-लर्निंग मॉड्यूल और एक इंटरफेस लॉन्च हो रहा है। आपके रूसा का एक फेसबुक पेज भी लॉन्च हो रहा है। अगले 2 माह में मयूरी हम लोग स्वयं नाम का एक पोर्टल और मोबाइल ऐप राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 500 नए कोर्सेज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल होंगे। हमारे देश भर के IITs, NITs, टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज इसको कोर्स को प्रस्तुत करेंगे जो मुफ्त में उपलब्ध होंगे। तो तुम अपने ही जिले में, अपने ही घर में पढ़ भी सकती हो, ज्यादा ऑप्शंस भी देख सकती हो। और प्रशासन जो इस वक्त हमारी इस बातचीत को सुन रहा है, निश्चित रूप से वो स्किल्स की अपॉर्चुनिटी को इन कंजंक्शन विद फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज को आप जैसी छात्राओं को पहुंचाएगा। अभिनंदन मयूरी, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार मॅम, मी मृणाली टेकाम, जीवनराज सीताराम पाटील मुनघाटे महाविद्यालय धानोरा, जिल्हा गडचिरोली। मला माननीय मुख्य महोदयांना एक प्रश्न विचारायचा आहे। माझा प्रश्न हा आहे की विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत्या तणावामुळे आत्महत्याचे प्रमाण वाढत आहे, तर तणाव व्यवस्थापनासाठी सरकार कोणते पाऊल उचलत आहे? So ma'am, this is, allow me to translate. Stress खूपच वाढतात. Ma'am, I thought I'll just translate. Sorry ma'am. मनीषा जी येतात मला मराठीतून. मॅम आपण प्रवीण आहात मराठीमध्ये, ते मला माहिती आहे. मला वाटलं की इतर राज्य बघताय म्हणून ते ट्रान्सलेट. बोलिए मनीषा जी, बाकी राज्यों के लिए So this is for the benefit of the other states who have joined us. The student raising the concern is Mrinalini Tekam from JSPM College, Taluka Dhanurka, from a very remote tribal district of Gadchiroli. She is raising a concern about the increased stress levels and increasing suicide rates among students, and what steps the government is taking for the health management and stress management among students. Over to HRD Minister, please. Thank you. Given that Manisha ji, everybody is listening to me, Mrinalini, मी हिंदी मध्ये बोलू चालेल का तुम्हाला? चालेल मॅम. चालेल मॅम, त्यांना हिंदी करते. हमारी ओर से प्रयास 2-3 हो रहे हैं। एक, हमने अपनी सभी यूनिवर्सिटी से आग्रह किया है जो भारत सरकार के मर्यादा में आते हैं कि वो छात्रों के लिए विशेष रूप से काउंसलिंग सेंटर स्थापित करें, जहां पर मात्र करियर गाइडेंस ना हो, बल्कि छात्र अगर किसी चुनौती से साइकोलॉजिकली गुजर रहा है तो उसके पास बात करने के लिए एक ट्रेन्ड काउंसलर उपलब्ध हो। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि आपके संस्थान में भी महाराष्ट्र सरकार के सौजन्य से इस प्रकार की काउंसलिंग की व्यवस्था हो। दूसरा, कई बार देखा गया है कि जो छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र किसी बड़े इंजीनियरिंग संस्थान में जाना चाहते हैं,
जैसा कि IIT, तो वो छात्र भी विशेष रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और उन पर दो प्रकार का एक जोर और भार पड़ता है। एक, जो मृणाली तुम्हारी तरह प्रादेशिक भाषा में बातचीत करते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनकी चुनौती ये होती है कि एडिशनल इंडियन लैंग्वेज को छोड़कर अंग्रेजी की जो पढ़ाई होती है उसमें कॉन्सेप्ट्स को समझने में समय लगता है। इसलिए ऐसे बच्चे ज्यादा रेमेडियल कोचिंग अथवा मदद लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा, बच्चे जाते हैं कोचिंग सेंटर क्योंकि उनको वहां पर पुराने टेस्ट पेपर्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ सेलिब्रेटेड प्रोफेशनल्स के माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं कोई कमेंट अथवा कोई लेक्चर प्राप्त हो जाता है या एडिशनल रीडिंग मटेरियल प्राप्त हो जाता है। आगामी 2-3 माह में हमारा ये प्रयास है कि हम IIT पैल राष्ट्र को समर्पित करें, जिसके माध्यम से 13 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस से संबंधित सारे प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स के माध्यम से हम लेक्चर्स मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। IIT सिस्टम्स में जो 50 साल से हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन सबको मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। छात्रों से हम आग्रह करेंगे कि वो विभिन्न भारतीय भाषाओं में एक हेल्पलाइन मुफ्त में हमारे छात्रों के लिए उपलब्ध कराए, ताकि जब छात्र से बात करेगा तो उनकी चुनौतियों को भी समझेगा और समाधान लाने में ट्रेन प्रोफेशनल्स के साथ उस छात्र को मदद दिलाने में भी थोड़ी बहुत हम लोग क्षमता उसमें देखते हैं। लेकिन मुख्यतः एक अपील मैं आज आप सबके माध्यम से माता पिता से भी करना चाहूंगी। हमने वेरीफाइड डेटा में ये देखा है कि हमारे कई छात्र जो कभी कोचिंग नहीं गए, वो बड़ी से बड़ी संस्थानों में मात्र अपनी मदद और अपने परिश्रम के आधार पर पहुंच रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर बच्चे को पनपने हम देखना चाहते हैं, 2 बच्चों की मां स्वयं होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कहना चाहती हूँ कि बच्चे को अपना फ्यूचर, अपना भविष्य खुद चुनने दीजिए। जब जबरदस्ती बच्चे को एक भविष्य की ओर धकेला जाता है तो कहीं ना कहीं उस छात्र के लिए असमंजस बढ़ता है कि मैं अपने सपने जीऊं या किसी और के। इसीलिए मेरा आग्रह है कि हम सरकार की ओर से हमारे छात्रों को विविध प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन ये एक सामाजिक चुनौती भी है, जिस चुनौती को पार करने के लिए हमें समाज के और विशेषता माता पिता की सहयोग की जरूरत है। Ma'am, other states have taken a lot of your time, so I would ask another question to be taken up from Maharashtra. Good afternoon, Honorable HRD Minister. I'm Shweta Zugrekar from University of Pune, MTech first year. Ma'am, my question for you is, how can we students contribute our academic research projects for initiatives like Make in India and Smart Cities initiatives? I think that the platform that is being proposed today by one very bright young man from Maharashtra itself is something that you can add on to. So let me say this, I will like to welcome even you to my office and I am hopeful that even Manisha ji can arrange for the 2 of you to come and meet me. Yes. And when you do meet me, do an amalgamation of your ideas on one platform. मैं देख रही हूँ पीछे के छात्र भी सोच रहे हैं कब हमको बुलाएंगे। ठीक है, मेरी इच्छा है कि आज श्वेता ने जो क्वेश्चन यहाँ पर किया, जोशी साहब ने जो बोला, आप सब बैठकर एक सामूहिक प्लान बनाकर छात्रों की ओर से मुझे मिलने आएंगे एंड आई एम श्योर कि हम लोग भारत सरकार की मदद से आपके स्वप्न को साकार कर पाएंगे और आपका कंट्रीब्यूशन रिसर्च की दृष्टि से, आपके नए आइडियाज एजुकेशन की दृष्टि से राष्ट्र भर के साथ शेयर कर पाएंगे। Let it be a student-led initiative, which I personally will support under the aegis of the Ministry of Human Resource Development. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much for a lovely interaction. Manisha ji, please extend my heartiest congratulations and grateful thanks to your Honorable Minister Vinod Tawade ji, who has been my senior colleague for years. Thank you, ma'am. We are grateful to you for giving this valuable opportunity to our students to interact with you. Just to close, I would like just invite our gracious Vice Chancellor of Pune University to give a formal vote of thanks.
Thank you, ma'am. Thank you for your time and giving us this we are pressed for opportunity time. from the state. And we would like to move to the next stage. Honorable Minister MHRD, Government of India, and the other dignitaries present over there, as well as my Vice Chancellor's colleagues here, our PURUSA Director, Mrs. Verma, our Dhanraj Mane, Director Higher Education. I'd like to take this opportunity, Madam, to thank you on behalf of all of us for inaugurating this technology platform. As far as we are concerned, use of technology in academic programs and our research program has been our primary focus. And with this, from this platform, we are creating 29 digital classrooms and e-learning modules. I'm sure that with these initiatives, not only our students and faculty members, but also the students and faculty members of other universities will also be highly benefited. This initiative, Madam, particularly through RUSA, is very important because state universities generally do not get enough funding. But RUSA is one scheme which is very important for the state universities. So I would request you to continue with this scheme even in the next plan. Since you're giving us a thank you, I'm looking at the two very magnetic personalities in terms of your students that I saw today. Inspired by them, I'm announcing a new competition. If you can focus the camera back on the two students, I think Mr. Joshi and Shweta. Yeah. हाँ, तो आप दोनों की वजह से आज मैं कॉन्टेस्ट अनाउंस करने वाली हूँ, जिसके बाद मैं अगले रंग की ओर बढ़ूंगी. और ये कॉन्टेस्ट है to suggest a name, an acronym, and a new logo for this particular scheme. A suggestion which will reflect the new vision and the dynamism of our students. It should have an all India character, and I'm hopeful that every state is listening to us. It should reflect the all India aspiration the students of government colleges and universities have of this particular scheme. And I would like to say that the entries should reach us maximum by the 15th of July. We will announce this new name, logo, acronym to the country by the 15th of August. But the students who wonder what will they get out of this particular competition, I would like to tell them that the winning entry will be given a study tour which includes lectures and seminars in a top-rated institutions abroad for 10 students and 1 teacher for 12 to 14 days at no cost to the student. It will all be funded by the Government of India, and as also a part of the award, the local winning institution will host a group of students from overseas. So that I had one proposal coming to me from a student in Andhra Pradesh as to whether I can facilitate a student exchange program. So this is a combined announcement for the student feedback which I got from Andhra Pradesh and the 2 brilliant ideas that I got from these 2 students in Maharashtra. So I'm hopeful that all of you join in this competition, and some of you then at the cost of Government of India have a 14-day trip to an institution overseas, which is a very celebrated institution. My best wishes to all the students and academicians who have joined us. Thank you so much. So lastly, I thank you, Madam, for launching various initiatives and inviting our students to your office. I thank all my colleagues. Thank you so much.